If you see the GSA syllabus, so the first point that you see, that is physical sciences. Now, in the CSS GSA syllabus, if you analyze the syllabus, so there are two parts. So please make a comment. There are two parts of CSS GSA syllabus. There are two parts of CSS GSA syllabus, part 1 and part 2. So if you open the CSS GSA syllabus, you will see two parts. Part 1 is of 60 marks and part 2 is of 40 marks. Part 1 comprises 60 marks and part 2 comprises 40 marks. Now in part 1, which is general science, the name of part 1 is general science, and the name of part 2 is general ability. So there are 60 marks for general science and 40 marks for general ability. Now general science is pure science, while general ability, that is based on logic and mathematics and arithmetic and other types of branches of knowledge. So today we are starting part 1, and again in part 1 we have 5 sub parts. In part 1 we have 5 sub parts. As per my experience and also past papers, there is one question usually from each of the 5 sub parts of part 1. पार्ट 1 के अंदर जो है फिर 5 मजीद सब पार्ट्स है और हर एक से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है. So the 5 sub parts that we have, number 1 is physical sciences, number 2 is biological sciences, number 3 is environmental science, number 4 is food science, and number 5 is information technology. So you people have to be experts at least at intermediate or bachelor level on these 5 sub parts: physical sciences, biological sciences, environmental sciences, food sciences, and information technology. These are 5 sub parts of part 1. Part 1 is general science. Now today we are starting physical sciences. Again in physical sciences we have astronomy, and we have kind of geography and disaster management, energy, which is mostly physics, and atomic structure, which is again physics and chemistry, and modern materials, chemicals, which is again kind of organic chemistry or biochemistry. So that is again also chemistry. Mostly it is chemistry or even agriculture, because pesticides, fertilizers, these belong to agriculture. Vaccines, antibiotics belong to medical sciences. Ceramics, plastics, semiconductors belong to applied physics or physics.
hazards, natural hazards and disasters. You can discuss this in geology, geography, and also in disaster management, which is itself now an emerging science. So we have these subparts in physical sciences. Now I'm giving you some tips to cover this paper. Number one, it's a huge syllabus. A lot of topics are there. You might have seen my today's notes. So just on solar system and galaxy and Milky Way and sun and earth and moon, so much data is there. So you cannot remember this data. It is impossible. Humanly, it is impossible. So what is the solution? The solution is going through this data, and some data your mind may absorb automatically, but on the other hand, your eyes will go through it, and when you see the MCQs or filling the blanks or short questions in GSA, so again your unconscious part of mind will become active, and you will remember that whether the answer is 2 or 3 or 4, because you will be having a glimpse. You have to go through it, but you cannot memorize it. तो GSA में आप हर चीज़ को याद नहीं कर सकते. इतने साइजेस है, इतनी डायमीटर्स है, इतनी उसका जो है मुख्तलिफ़ किस्म के उसमें यूनिट्स है, तो उसको याद करना जो है वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है. लेकिन जब आप इसे गुजरते हैं, आपके जहन और माइंड इसमें से गुजरते हैं, तो एग्ज़ाम में फिर आपको याद आ जाता है कि यार ये 2, 3, 4 में कौन सा बनता है. आपको 2, 3, 4 याद नहीं होते, लेकिन उसको आपको अप्रोप्रिएट थोड़ा सा आइडिया होता है कि यार ये ज़मीन जो है ये अपना सूरज से कितना दूर है, तो सूरज और चाँद के दरमियान कितना फासिला है, तो आदमी को थोड़ा सा रफ सा आइडिया होता है. सो देन दैट पर्सन बिकम्स eligible to write the correct answers. Now why we call it physical sciences? Because physical sciences mean that these are natural sciences. Natural sciences are exact sciences. Exact sciences means that 2 plus 2 is equal to 4. Because on the other hand, we have mathematical sciences or logic, which is general ability, and we also have social sciences. Now social sciences are not natural sciences, social sciences are not exact sciences, and social sciences are not natural sciences. Well, political science is a science, but it is not physical science, because physical science must be exact. फिजिकल साइंस में डाउट नहीं होता, उसमें ओपिनियन नहीं होता, वो जो है वही है. उसमें आप इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते कि जी ये इस तरह है तो उस तरह है. तो इस तरह की चीज़ें जो है वो फिजिकल साइंसेज में नहीं होते. नॉलेज एज अ होल इज डिवाइडेड इनटू साइंस एंड आर्ट. साइंस इज मोर सिस्टमैटिक, while art that depends on the human creativity. In the art, again we have two types of arts: utilitarian arts and fine arts. Utilitarian art is for the sake of utility, for the sake of money. For example, a carpenter is also doing art, but that is utility art, utilitarian art. That is not fine art. अब एक तरखान है, कारपेंटर है, वो बड़ी खूबसूरत कुर्सी बनाता है या बड़ा खूबसूरत मेज़ बनाता है, तो वो भी आर्ट है. लेकिन ये वो वाला आर्ट नहीं है जो एक बंदा पेंटिंग बनाता है या म्यूज़िक है, क्योंकि ये वो पैसे के लिए करता है. जो पैसे वाला होता है, जो बेनिफिट वाला होता है, यूटिलिटी वाला होता है, दैट इज़ कॉल्ड यूटिलिटेरियन आर्ट. और जो आर्ट आप अपने मज़े के लिए करते हैं, एस्थेटिकल सेंस के लिए करते हैं, जमालियाती हिस्स को ब्यूटी के लिए करते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड फाइन आर्ट. तो फाइन आर्ट के अंदर फिर लिटरेचर है और म्यूज़िक है, डांस है, ये सारी चीज़ें हैं. तो ये आपको जहन में रखना होगा कि नॉलेज जो है, नॉलेज इज़ डिवाइडेड इनटू साइंस एंड आर्ट. आर्ट डिपेंड्स ऑन ह्यूमन क्रिएटिविटी, ह्यूमन इमेजिनेशन. That is for aesthetical satisfaction. That is not exact, that is not universal, that is not universally verifiable, and that is not systematic. On the other hand, science is systematic, verifiable, and that is the same almost everywhere except for social sciences, which may have a little differences.
But the chemistry of Japan, the chemistry of Saudi Arabia, the chemistry of Pakistan is the same chemistry. तो जो एग्जैक्ट साइंस है या फिजिकल साइंस है, ये दुनिया के में जहाँ भी होगा वो एक जैसा होगा, दो किस्म की केमिस्ट्री नहीं है. लेकिन आर्ट जो है वो मुख्तलिफ किस्म का आर्ट हो सकता है, रिलीजन जो है वो मुख्तलिफ किस्म के रिलीजन हो सकते हैं, फिलासफी जो है वो भी एग्जैक्ट होती है, क्योंकि फिलासफी भी रैशनल माइंड पे होती है, लॉजिक पे डिपेंड करती है. तो उसमें भी आप मुख्तलिफ टाइप्स उसको हो सकते हैं, स्कूल्स हो सकते हैं. अब साइंस के भी तो टाइप्स है, केमिस्ट्री भी साइंस है, फिजिक्स भी साइंस है, ठीक है. तो इस तरह के फिलासफी के अंदर भी मुख्तलिफ ब्रांचेज है, लेकिन फिलासफी जो है वो अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकती. मसलन एक क्रिश्चियन कहते हैं जी मैं बिलीवर हूँ, मुस्लिम भी कहते हैं कि जी मैं बिलीवर हूँ, मैं बिलीव करता हूँ. तो उनके बिलीफ बिल्कुल उल्टे हो सकते हैं. मुस्लिम कहते हैं कि एक खुदा है, और क्रिश्चियन कहते हैं कि जिन्हें तीन खुदा है, ट्राइनिटी और मोनोथीज़म. तो ये दोनों बातें बिलीफ सिस्टम है, दोनों रिलीजन्स है, लेकिन दोनों एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रही है. तो ये चीज़ पे साइंस में या फिलासफी में नहीं होता. दैट इज़ मोस्टली ऑब्जेक्टिव. So with this mindset, if you study GSA, so you will enjoy your course. Otherwise, it is so boring and it is so lengthy. Now, number one is astronomy. Astronomy is the scientific study of celestial bodies. Please write it. Astronomy is the scientific study of celestial bodies. CELESTIAL. Celestial का मतलब क्या है? आसमानी. Which is like in the space, and we study them scientifically. So that is called astronomy. You might have heard another terminology which is astrology. So astrology is the unscientific study of celestial bodies. And astrology is a pseudo science. जो एस्ट्रोलॉजी है वो सोडो साइंस है. सोडो का स्पेलिंग क्या है? PSEUDO. सोडो का मतलब है फॉल्स. वो एक फॉल्स साइंस है एस्ट्रोलॉजी. सितारों की दुनिया जी, मेरा सितारा क्या कहता है, आज सितारे क्या कहेंगे, मैं जी लिब्रा हूँ और तुम जो है लीव हो, तो आज लिब्रा का दिन कैसे गुजरेगा. तो वो वाला जो चक्कर है उसको एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, लेकिन वो अनसाइंटिफिक है. एस्ट्रोनॉमी जो है ये साइंस है, टिक टॉक साइंस है. इसमें नासा हो गया, ये अब इंडिया देखो, इंडिया का जो है वो पहुंच रहा है या पहुंच गया होगा मून के साउथ पोल पे. ये इंडिया का डिस्टिंक्शन है. अभी तक साउथ पोल पे कोई बंदा नहीं पहुंचा, इसकी चांद के कोई भी मशीन या कोई भी चीज़ वहाँ नहीं पहुँची है, क्योंकि साउथ पोल में वाटर है और हो सकता है साउथ पोल पे कोई ज़िंदगी नज़र आ जाए. तो इस वजह से इंडिया जो है वो, उनका जो क्या नाम है वो चंद्रिका है कि क्या है, चंद्रिका 3 है, चंद्रयान 3 है. तो वो मून के साउथ पोल पे या पहुँच गया होगा, अभी मैंने लेटेस्ट नहीं पढ़ा. तो वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप उसको, सोडो साइंस एक लफ्ज़ है, अलग नहीं है. सोडो साइंस इज़ वन वर्ड, इसके दरमियान स्पेस नहीं है. सो हियर वी आर कंसर्न मोर विद एस्ट्रोनॉमी, नॉट विद एस्ट्रोलॉजी. अब पाकिस्तान में जो है हर बंदा एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड होता है जी. मेरा हाथ देखो, मेरा ये देखो, मेरा वो देखो, मेरे सितारे क्या कहते हैं. तो ये हवाई बातें हैं. इसमें भी हो सकता है थोड़ा बहुत कोई ट्रुथ हो, लेकिन अभी तक साइंस ने उसको माना नहीं है कि यार ये भी कोई चक्कर है. So in the physical sciences, the first one that we have, that is constituents and structure. Universe, galaxy, light year, solar system, sun, earth, astronomical system of units. तो ये आपने जो है मैंने आपको नोट्स दिए हैं इन सब के, और इन सब के नोट्स जो है आपने पढ़ने हैं, और इसको आपने एक किस्म का रट्टा लगाना है जहाँ आपसे हो सके, और जहाँ रट्टा आपसे नहीं लगता तो फिर आपने इसको बार बार पढ़ना है
ताकि ये जो है आपके उसमें आ जाए, उसमें सिस्टम में। मसलन जब हम यूनिवर्स को पढ़ते हैं कि भाई यूनिवर्स क्या चीज़ है, जो आपका पहला टॉपिक है, ठीक है, तो इसमें जो यूनिवर्स है, आजकल जो नई थियरी आई है वो क्या है, वो है मल्टीवर्सेस, कि यूनिवर्स नहीं है, यूनि का मतलब है वन, तो वन नहीं है, मल्टाई है, मल्टाई वर्सेस या मल्टीवर्स। बहुत ज़्यादा कायनात है, एक कायनात नहीं है। तो कायनात में जितना स्पेस है, जितना टाइम है, और ऑल थिंग्स इंक्लूडिंग गैलेक्सीज एंड सोलर सिस्टम्स आर इंक्लूडेड विद इन द यूनिवर्स। तो जो कुछ है, मटेरियल है, नॉन मटेरियल है, तो वो जो है सारा किस में आता है, वो यूनिवर्स में आता है। अब बड़ी हैरानगी की बात है कि यूनिवर्स जो है दैट इज ओनली 5% मटेरियल, 95% यूनिवर्स इज नॉन मटेरियल, which is called dark energy and dark matter. अब 95% तकरीबन रफली स्पीकिंग यूनिवर्स जो है वो मैटर नहीं है, वो क्या है, डार्क एनर्जी है और डार्क मैटर है। तो ये बाद में आप गूगल करें, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में डार्क एनर्जी जो है वो 70% है और डार्क मैटर जो है वो कोई 25% है। बाकी जो 5% है, जो विजिबल यूनिवर्स है, जो मटेरियल यूनिवर्स है, वो सिर्फ 5% है। बाकी यूनिवर्स जो है वो डार्क एनर्जी और डार्क मैटर पे कंसिस्ट करता है। सो देयर इज अ क्वेश्चन दैट हाउ मेनी सोलर सिस्टम डज अ यूनिवर्स हैव? So the latest data collected by NASA indicates that there are 3,916 solar systems within our Milky Way. अब आप देखिए कि हमारा सोलर सिस्टम है, सन दरमियान में है और प्लैनेट जो है वो उसकी वो इर्द गिर्द घूम रही है, लेकिन ये एक सोलर सिस्टम नहीं है। आपके 3,916 जो है वो सन है हमारी मिल्की वे में। NASA indicates that there are 3,916 solar systems within our Milky Way. अब गैलेक्सीज जो है वो भी हज़ारों लाखों में है। हमारा जो गैलेक्सी है उसको हम मिल्की वे कहते हैं। तो मिल्की वे इज़ द नेम ऑफ द गैलेक्सी इन विच अर्थ इज सिचुएटेड एंड आवर सन इज सिचुएटेड, आवर सन विद इट्स ओन प्लैनेट्स। लेकिन इसी तरह हमारी मिल्की वे के अंदर जो है, ये हमारा जो सन जो हमें नज़र आता है दिन को, जो हमारी अर्थ के साथ कनेक्टेड है, इसी तरह जो है 3,916 जो है सोलर सिस्टम्स विद इन आवर मिल्की वे जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। What does this mean? This means that there are 3,916 stars with planets orbiting them in our single galaxy. जो हमारी गैलेक्सी है जिसको हम मिल्की वे कहते हैं, तो इसी मिल्की वे में 3,916 और सूरज है और हर सूरज के अंदर अपने अपने प्लैनेट जो है वो घूम रहे हैं। ये सिर्फ हम एक मिल्की वे की बात करते हैं, एक गैलेक्सी की बात करते हैं। Now there is another question that what is the relationship between the earth and the solar system and the universe? अब अर्थ का इसके साथ क्या ताल्लुक है? So our earth orbits the sun in our solar system. Our sun is one star among the billions in the Milky Way galaxy. Our Milky Way galaxy is one among billions of galaxies in our universe. So we are very unique in our universe because there are billions of other galaxies and our galaxy is Milky Way and we have our own system. Now we discuss a little about the galaxy, that what is galaxy.
Galaxy is a system of stars, stellar remnants, interstellar gas, dust, and dark matter bound together by gravity. कायनात में जो सबसे स्ट्रेंज चीज़ है वो ग्रेविटी है। और न्यूटन जो है इतना बड़ा साइंटिस्ट है और साइंस की दुनिया का बेताज बादशाह जो है वो इसलिए है कि न्यूटन डिस्कवर्ड द ग्रेविटी। वो जो मशहूर कहानी है कि जी वो एप्पल जो है वो गिर गया तो न्यूटन को ये ख्याल आया कि ये एप्पल जो है नीचे क्यों आ रहा है, ये ऊपर क्यों नहीं जाता, ये इधर क्यों नहीं जाता, उधर क्यों नहीं जाता। अरिस्टोटल जो है वो भी एक साइंटिस्ट था, लेकिन उसकी कुछ साइंस की जो थियरीज थी वो बाद में गलत साबित हुई, जिस तरह कि आम बंदा समझ रहा है। क्योंकि अरिस्टोटल के वक्त जो 2500 साल पहले जो है इतना सोफिस्टिकेशन नहीं था। वो ये कह रहा है कि जो चीज़ जितनी भारी होगी तो इतनी तेज़ जो है वो ज़मीन की तरफ जाएगी। लेकिन न्यूटन ने कहा कि नहीं, वो ग्रेविटी है। अब इतना बड़ा जहाज़ है तो वो क्यों नहीं नीचे आ रहा, ठीक है। और छोटा सा एक पेंसिल जो है, पेन जो है वो एकदम से नीचे चला जाता है। तो द न्यूटन फोर्थ लॉ, जिसको हम कहते हैं फोर्थ लॉ, दैट इज़ द लॉ ऑफ ग्रेविटी। न्यूटन के 4 लॉज है। फर्स्ट लॉ यू ऑलरेडी नो, दैट इज़ अबाउट इनर्शिया, दैट समथिंग इज आइदर इन रेस्ट और इट विल बी इन मोशन, and when it is at rest, so that is called inertia. तो न्यूटन का सेकंड लॉ है, दैट इज F इज इक्वल टू ma, दैट फोर्स इज इक्वल टू मास एंड एक्सेलरेशन। जितना फोर्स लगाओगे इतनी चीज़ तेज़ी से जाएगी। एंड द थर्ड लॉ इज द लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। द फोर्थ लॉ इज द लॉ ऑफ ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन। The difference between gravity and gravitation is that gravity is between Earth, the center of Earth, and other bodies, while gravitation, that is interstellar or that is interplanetary force, जो ज़मीन के साथ मखसूस है उसको ग्रेविटी कहते हैं। लेकिन पूरा कायनात जो है वो ग्रेविटी पे चलता है, ठीक है ना। मेरा ये कान इधर है और दूसरा कान इधर है, तो ये दोनों कान एक दूसरे के साथ मिलती क्यों नहीं है? क्योंकि दरमियान में मेरा फेस है। तो यही मिसाल जो है वो ग्रेविटी का है कि यार ये चांद जो है ये ज़मीन की तरफ क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं गिर रही, या सूरज क्यों नहीं गिर रहा। तो उसका वजह जो है वो क्या है, वो है ग्रेविटी, कि इनके दरमियान जो है अट्रैक्शन है, रिपल्शन है, और इस अट्रैक्शन और रिपल्शन की वजह से जो है वो ये कायनात जो है अपनी जगह पे कायम है। सो अ गैलेक्सी इज़ अ सिस्टम ऑफ स्टार्स। इसमें स्टार्स होते हैं। स्टार का मतलब यह है कि इसकी अपनी रोशनी होती है, अपना हीलियम इसमें बनता है, अपना हाइड्रोजन होता है और वहाँ से अपनी रोशनी निकलती है, दैट इज़ कॉल्ड स्टार। एंड प्लैनेट डजंट हैव इट्स ओन लाइट, इट डिपेंड्स ऑन द सन। प्लैनेट और स्टार में ये फ़र्क होता है कि प्लैनेट जो है उसका अपना स्टार नहीं होता। सैटेलाइट जो होता है दैट इज़ ह्यूमन मेड, सो व्हेन इट इज़ ह्यूमन मेड सो वी कॉल इट सैटेलाइट, अदरवाइज इट इज़ कॉल्ड मून, ठीक है। फिर ये 3 किस्म की आ जाती है कि एक स्टार है, एक प्लेनेट है और एक मून या सैटेलाइट होता है। सैटेलाइट इंसान बनाता है, मून जो है वो नेचुरल है, प्लेनेट जो है वो नेचुरल है, सन जो है वो नेचुरल है। अगर आप गिरदशोप स्केल पढ़े तो गिरदशोप स्केल पे एक ऐसा टाइम आएगा कि इंसान अपना यूनिवर्स खुद बनाएगा। जिस तरह कि हमने अभी ये बनाया है, सैटेलाइट बनाया है, हम स्पेस में अपना मून छोड़ते हैं, अपना चांद छोड़ते हैं, तो इसी तरह फिर इंसान जो है अपना पूरा यूनिवर्स भी बनाएगा। उसमें 1000 साल लगते हैं, 500 साल लग सकते हैं। अगर टेक्नोलॉजी और नासा, जिस तरह कि नासा लगा हुआ है, इंडिया लगा हुआ है, चाइना ने ऑलरेडी अपना मून बनाया हुआ है, आर्टिफिशियल मून बनाया है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फील्ड है जिसको बंदा पढ़े। अच्छा, स्टेलर रेमनेंट्स, जब बिग बैंग हो गया और ये सारे स्टार्स इधर उधर बिग प्लैनेट्स वगैरह ये सारे, तो इसमें से कुछ जो है वो स्टेलर रेमनेंट्स, स्टार के कुछ रिमेनिंग पार्ट्स रह गए और वो भी अभी भी यूनिवर्स में जो है मौजूद है। इंटरस्टेलर गैस, एक स्टार और दूसरे स्टार के दरमियान जो कहते हैं उसको इंटरस्टेलर कहते हैं। तो इंटरस्टेलर के दरमियान गैस भी है, इसके दरमियान डस्ट भी है और डार्क मैटर भी है।
और बाउंड टुगेदर बाय ग्रेविटी। तो ये गैलेक्सी का डिफिनीशन है। अ गैलेक्सी इज अ सिस्टम ऑफ स्टार्स, स्टेलर रेमनेंट्स, इंटरस्टेलर गैस, डस्ट एंड डार्क मैटर बाउंड टुगेदर बाय ग्रेविटी। The world is derived from the Greek galaxias, literally Milky, a reference to the Milky Way galaxy that contains the solar system. अब ये गैलेक्सी जो है ये कहाँ से आया है? गैलेक्टिक या गैलेक्सियाज। तो गैलेक्सिया मीन्स मिल्की। जो ग्रीक्स लोग थे उन्होंने पहले इसका आसमान को पढ़ना शुरू किया। उससे पहले और बाद में जो मजहबी लोग थे वो बस ये चीज़ें पढ़ते मरते नहीं थे। वो कह रहे जी बस कोई देवता है, खुदा है, कोई गॉड है, वो ये सारा सब कुछ कर रहा है, बस जी किताब पढ़ो, अपना बाइबल पढ़ो, इन चीज़ों में मत पढ़ो। लेकिन ग्रीक्स ने जो है इन चीज़ों को ह्यूमन माइंड से पढ़ना शुरू किया कि यार इससे डरो मत, ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है जिसको हम नहीं पढ़ सकते। तो ये जो गैलेक्सी का वर्ड है ये ग्रीक गैलेक्सिया से आए हैं, क्योंकि ये मिल्की वे अगर आप आसमान में देखते हैं तो वो ऐसा लगता है जैसे कोई दूध किसी ने बहाया हो। तो इस वजह से उसका नाम जो है वो मिल्की वे जो है वो बन गया। नाउ हाउ मेनी प्लैनेट्स आर इन आवर गैलेक्सी? दे माइट बी, बट एट द सेम टाइम आवर सन होस्ट 8 planets. So planets might be more numerous. It all depends on circumstances and causality. However, in our galaxy, the Milky Way, there are around 100 billion estimated planets at least. ये जो 8 हमारे नोन है, और डेली आप देखते हैं कि जी कोई और प्लेनेट जो है वो पैदा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो कभी वो प्लूटो जो है, प्लूटो को प्लेनेट बनाते हैं, कभी नहीं बनाते, मुख्तलिफ किस्म की डिफिनीशन भी है। लेकिन in our galaxy, the Milky Way, there are around 100 billion estimated planets, और 100 बिलियन जो है वो प्लैनेट्स है, जिसमें 8 जो है वो आप लोगों को मशहूर है, जिसको आप पहले से जानते हैं, जिसमें अर्थ जो है ये भी एक प्लैनेट है। अब अर्थ पे हम ज़मीन पे बैठे, हमें ये फ्लैट नज़र आ रहा है, असल में ये अर्थ भी ऐसा ग्लोब की तरह थोड़ा सा राउंड जो है, ये भी एक प्लैनेट है जो ये भी घूम रहा है पूरी कायनात में। लेकिन चूँकि हम इसमें बैठे हैं, जैसे कि किश्ती में बंदा बैठा होता है तो किश्ती उसको जो है वो लगती है कि मैं तो किश्ती अपने घर में बैठा हूँ, हालांकि दूसरी बंदे को वो किश्ती जो है वो मूविंग नज़र आती है। लेकिन ये किश्ती के अंदर, या बस हो गया, बस में बंदा बैठा होता है, वो कहते हैं मैं तो अपनी सीट पे बैठा हूँ। तो हमारा जो अर्थ है ये भी पूरी इस सिस्टम का एक सिस्टम है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, इसको आप प्लीज़ पढ़ लीजिए। नोट्स भी मैंने आपको दिए हैं, गूगल में भी काफ़ी जो है मौजूद है। तो मज़ीद मैं आपको क्या बताऊंगा, ये सारा साइंस है, लेकिन थोड़ा सा मैंने आपको ये इंट्रोडक्शन दे दिया कि प्लीज़ नेक्स्ट क्लास से पहले जो है आप ये फ़िज़िकल साइंसेस का जो एस्ट्रोनॉमी का पार्ट है इसको कवर करें, इसको बार बार पढ़ें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि भाई हमारा जो अर्थ है, जो सन है, जो गैलेक्सी है, मिल्की वे है, ये यूनिवर्स है, ये कैसे काम कर रहा है, कैसे चल रहा है, लाइट ईयर क्या होता है, यूनिट्स जो है वो कैसे बनते हैं। तो ये सारा जो है आपने इसको पढ़ना है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एग्ज़ाम में कभी कभी इसमें से एक डिफिनीशन आता है या कोई MCQ वगैरह आता है, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिर भी GA से एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें आपको 100% मार्क्स मिल सकते हैं। 100% लोग इसमें लेते हैं, क्योंकि ये बड़ा क्लियर किस्म का पेपर है। तो आपने इसको मज़ीद पढ़ना है, और जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं वो तो आपको 50 दफ़ा पढ़ने पड़ेंगे। So thank you Anila once again, and Dilaves for your comments. So please read the notes, and if possible come live in SAFE 2 and give a presentation on astronomy. जो आज हमारा टॉपिक था इस पर एक प्रेजेंटेशन दे दिए, एक पावर पॉइंट खूबसूरत सा बनाए, इसमें सन दिखाए, इसमें जो है मून दिखाए, इसमें अर्थ दिखाए, प्लैनेट्स दिखाए, गैलेक्सी दिखाए, एक अच्छा सा लेक्चर दे दे। सो ये आपका अपने भी प्रैक्टिस हो जाएगा और बाकी लोगों को भी इसका फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड नाइट।